लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी LDA को शर्म आनी चाहिए कि तुम लोगों को अल्लाह का कोई खौफ है कि अगर तुम लोगों ने कोई चीज़ डिमोलिश करनी है तो एटलीस्ट वहाँ पे जो परिंदे और जानवर थे उनको तो रिलीज़ कर देते। भट्टी बर्ड मार्केट जो कि दाता दरबार के बिल्कुल करीब में है, उसको बुलडोज़र्स ने परिंदे जो हैं और कबूतर, उसमें हज़ारों किस्म के परिंदे, बिल्लियाँ और मुख्तलिफ और जानवर जो थे वो केजेस यानी वो पिंजरों के अंदर थे, और इन्होंने उसको बुलडोज़र के साथ जो है विदाउट उनको रिलीज़ किए हुए, ना बर्ड्स को रिलीज़ किया ना जानवरों को उन पिंजरों से निकाला, इन्होंने बुलडोज़ करके सारा सीमेंट और जो ईंटें हैं वो उन बेज़ुबानों के ऊपर गिरी और सारे मर गए। वहाँ पे जी कोई चौक बनना है। तुम लोगों को अल्लाह का खौफ बिल्कुल लगता नहीं है कि बेज़ुबानों के साथ जिस तरीके से वो बेचारे पिंजरों में अपने चीख रहे थे, जिसमें बहुत सारे परिंदों के साथ साथ बिल्लियाँ और कुछ और जानवर और डॉग्स भी थे, उनको तुम लोगों ने कितनी बेदर्दी से मार दिया यार। तुम लोगों का ज़मीर नहीं है। लेकिन याद रखना, इसका हिसाब अल्लाह ताला तुमसे ज़रूर लेंगे, तुम सबसे। LDA को शर्म आनी चाहिए कि आप एटलीस्ट अगर आपने वो इंक्रोचमेंट हटानी थी तो उन पिंजरों को खोल देते, उनको आज़ाद कर देते। उन्हीं पिंजरों में वो बेचारे तड़प तड़प के जानवर और बिल्लियाँ और डॉग्स और जो परिंदे थे वो लाखों जो है वो हज़ारों के करीब मर गए। अल्लाह तुम लोगों से हिसाब ज़रूर लेगा, क्योंकि तुम लोगों का ज़मीर मर चुका है। लेकिन अल्लाह तुम लोगों से हिसाब ज़रूर लेगा इस क्रूअल्टी का। इतने तुम लोग जालिम हो, माय गॉड। Since the time this incident has happened, I have tried my level best to make a video without crying, but it's just not happening. What has happened at the pet market? दाता दरबार वाला पेट मार्केट पे जो हुआ है, LDA ने जो किया है, it makes no sense to me. It just literally makes no sense to me. अगर वो इलीगल लैंड था भी तो इवैक्यूएशन कराना भी आपका फर्ज है। अगर आपने उसको तोड़फोड़ वहां मचानी भी थी तो इवैक्यूएशन कराना आपका फर्ज है। आपने बेजबान जानवरों को रबल के नीचे दबा दिया फॉर नो रीजन। अपने साथ आपने गलत किया है। क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं, LDA आप कंस्ट्रक्शन कर लोगे, चीजें ऊपर हो जाएंगी, बट दिस इज नॉट गोइंग टू बी फॉरगॉटन. This will not end in the day and age that we are today. एनिमल राइट्स के ऊपर वैसे ही बहुत बात हो रही है, ठीक है, और पूरी दुनिया जो है वो यूनिफाइड है कि ह्यूमैनिटेरियन एंड वेयर एनिमल राइट्स स्टैंड, एवरीवन इज यूनिफाइड. सो इफ यू डू दिस टू योरसेल्फ. वो तो जाने चली गई बिकॉज आई डोंट नो कौन सा आपने शायद खुदा को अपना मुंह नहीं दिखाना, और आप ये करते जा रहे हैं. डॉग कलिंग भी होती है और जूस के अंदर भी पता नहीं जानवरों के साथ क्या हो रहा है. मतलब ह्यूमन बीइंग्स राइट नाउ आर द मोस्ट इवल क्रीचर्स. So it makes no sense. But what can happen now is that people who have done this have to be held accountable. There have to be laws जो इनके खिलाफ पास हो और implementation हो, और they should go behind bars. There should be some kind of punishment. Now enough is enough. You can't just let this keep on happening. For what reason? It just does not resonate on any level. Just cause आप कर सकते हो तो आप कर रहे हो. ये मुझे लगता है बगैर सोचे समझे चीजें होती हैं. ऑर्डर्स कौन देता है? इस चीजों के ऑर्डर्स कौन देता है? और उसके बाद करते वक्त दिल नहीं धरता आपका. मतलब मुझे समझ नहीं आती, किसी इनोसेंट की जान लेने से हम लोग इतने टाइम से इस रईल को गालियां दे रहे हैं क्योंकि वहां पे जानी नुकसान हुए जा रहा है. लेकिन हम वही कर रहे हैं निहत्तों को मार के बिना वजह, फॉर नो रीजन. और ये रोक सकते थे इसको. दिस वाजंट समथिंग दैट couldn't have been prevented. So federal government, everyone who's responsible, WWF Park, WWF, whoever can step in, there should be some action taken now. This is unacceptable. So I'm one of the lucky few chosen Pakistanis whose parents decided that, their children need to grow up around nature and animals.
And I spent a lot of my weekends at the beach, swimming in the sea. We used to go swimming with dolphins, scuba diving, imagine, in Pakistan, right? And of course, rescuing all kinds of animals, bless my mother, not just dogs and cats and birds, but, we had goats, we had ducks, we had rabbits, we had rescued even a crow, a baby crow, because my mother was like, he's alone in this world. I don't know where his parents are. And it's a life that we must respect and help him get back into his own life, set him free once he has healed. So I grew up in this environment, and I am so eternally grateful to my parents for it. And as I grew older in Pakistan, I also realized how these animals, how nature, how the ocean was helping me heal, was helping me become more aware of my environment, was teaching me kindness and empathy, was teaching me patience and love for all of Allah's creations, was teaching me how to respect a life that's more vulnerable than me, that's simpler than mine, that needs me to protect it. And it gave me empathy, it gave me wisdom, it gave me spiritual, like I said, healing, awareness, self-awareness, patience. Just being around animals and nature taught me so much. And that's when I realized that in ancient religions, they used to worship nature because it is the greatest creation of Allah. Wildlife, animals, plants. And if we disconnect with them, we are essentially disconnected with who we are. So what LDA has done as of yesterday or day before at the pet market, the banyan tree outside Rahat Bakery in Lahore as well, not too long ago, it doesn't just mean that they are following the law or breaking the law. It means that they're showing that there's a lack of compassion, lack of understanding, lack of wisdom, lack of empathy, lack of humanness, and lack of respect for God's creations on this earth. And that, I think, is a far bigger loss than just destroying lives, killing innocent animals. The biggest loss is the fact that your souls are dead. It's not legal, illegal, or whatever. You have lost a part of your soul, your humanness. And that has been our biggest loss with what has happened over the last few days. And to those animals who lost their lives so ruthlessly, I feel like they're better off going back to Allah, where they belong, in a safe space where they're free, where they're happy. And we, on the other hand, are left with the consequences of our actions. Disparity, poverty, illiteracy, dislike, hate, smog, corruption. The list is endless. So ultimately, we all know who the loser is. We have killed actively a part of ourselves with such actions, and we will suffer the consequences as we are. The loss is only ours. Only ours. And I hope we realize that much sooner than later. वो असली जिंदा जानवर थे। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल्स पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल्स पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.